Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video I'm doing this bridesmaid beautiful makeup look that you can wear for your friends, your brother, your sisters, your close cousin, whatever's wedding. It will look really good. So let's get started. I'm using this Renee Makeup Oil. This is really good. ये ना बहुत अच्छा पीस दे देता है आपके फेस को. इट हाइड्रेट्स इट रियली वेल. सारे ड्राई पैचेस हाइड्रेट हो जाते हैं और ओवरऑल जो मेकअप है बहुत अच्छे से सेट करता है आपके फेस पे. देन आई एम यूजिंग दी शुगर सीरम फाउंडेशन. अगेन अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन. It has great coverage and at the same time it gives a nice natural glowy look. I'm blending it out using a beauty blender, which is what I prefer with this फाउंडेशन. आई फील लाइक ब्रश के साथ थोड़ा सा ना वो स्ट्रोक्स दिखते हैं. सो या आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड लाइक यू कैन सी इट माइट लुक अ लिटिल लाइट बट ये बिल्कुल मेरे शेड का है. देन आई एम यूजिंग माई करंट फेवरेट कंसीलर विच इज़ द की ब्यूटी कंसीलर एंड दिस वन इज़ अ शेड और टू लाइटर देन माई फाउंडेशन. सो इट इज़ गिविंग मी दैट हाईलाइट टी लुक. सो उसके लिए मैंने ऐसे लगाया है ऑन ऑल ऑफ माई हाईलाइटिंग पॉइंट्स अंडर माई आईज, ब्रिज ऑफ माई नोज, cupid's bow, chin, and then I am blending it all out again with a beauty blender. This one also has a really good coverage. So yes. Now to set that concealer and the foundation, I'm using the K Beauty loose powder and अभी मैं अपने स्पंज से ही इसको सेट कर रही हूँ. So I'm using excess powder because I do get foundation and concealer in my fine lines. वहाँ पे क्रीज करता है. सो उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ. एंड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट हैव एनी फ्लैश बैक. सो येस, ऑल द फोटोज़ विल कम आउट नाइस. फिर मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का ये क्रीम कंसीलर. बहुत सारे के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हो गए हैं बट आई रियली लव दैम ऑनेस्टली. एंड आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई cheek bones as you can see and then on my jawline as well to cancel out all of that double chin and the fat and so that the photos come out really good. And always keep in mind when you're doing your contouring कि जो cheek वाला contour होता है वो upwards blend होना चाहिए और जो jaw वाला होता है वो downwards blend होना चाहिए. That is the key. And now I'm just dusting off the excess powder and taking my brow pencil. This one is from Insight. Very affordable. I think 110 rupees की है ये, but it's so good, so creamy and sets your brows really well. I've seen people do like full on glam makeup look and then skip their brows completely. Please don't do that. Brows तो ज़रूर करना because it ties the whole look together. So don't skip it even if you're just filling them in थोड़ा सा, but definitely do that. Moving on to the eyes, I'm taking this exotic flavor palette that I got from an Instagram store and it is amazing. As you can see बहुत सारे colorful looks shades थे उसमें and you can create so much from it, but I'm doing a neutral sort of a shade today. So ये मैंने pinky न्यूड शेड लिया और इसको अपने लिड्स एंड क्रीज में अच्छे से लगाया. देन आई टुक अ फ्लैट ब्रश एंड आई टुक दिस डार्क ब्राउन शेड एंड इसको मैंने लगाया अपने आउटर कॉर्नर्स पे. एंड बेसिकली मैं बहुत धीरे धीरे से बिल्ड कर रही हूँ सो दैट ये बहुत ओवर ना लगे या पैची ना लगे. एंड द की रियली इज़ कि आप इसे धीरे धीरे ही बिल्ड अप करो बिकॉज इफ़ यू टेक टू मच एक बारी में then it will not blend out nicely and it will not give a nice look. So yeah, I'm taking a little bit, उसको थोड़ा blend कर रही हूँ and then I'm adding a little bit again. As you can see मैं थोड़ा इसको ना I am taking it from outer corners towards my lash line. So yeah, and then वो जो पिंकी न्यूड शेड था उससे मैंने अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया सो दैट एवरीथिंग लुक्स वेल ब्लेंडेड. एंड उसके बाद वो जो ब्राउन शेड था देन अगेन आई टुक दैट ऑन माई लोअर लैश लाइन ओनली फ्रॉम आउटर कॉर्नर्स टू द सेंटर ऑफ माई आई. दिस गिव्स अ रियली नाइस फुलर आई वाला लुक. Then for my lashes I'm taking this mascara from Flower Beauty. आप definitely false lashes use कर सकते हो बट आई एम टेरिफाइड ऑफ फॉल्स लैशेस बिकॉज मुझसे नहीं लगती हैं. एंड आई नो जिस दिन मैं लगाने बैठ गई ना मैं अपना पूरा लुक बर्बाद कर दूंगी. सो आई जनरली गो फॉर मस्कारा ओनली एंड दिस मस्कारा इज़ रियली नाइस, गिव्स यू अ रियली फुलर लुक. सो yes. Then to set that cream contour I'm using this sugar का palette. It is my most favorite. Almost हर वीडियो में आपने ये देखा होगा. So I'm setting my contour doing the same thing upwards and downwards वाला. And then moving on to my blush which is the Colorbar Cheek Illusion blush. Beautiful color, went really well with this look. बहुत कम लगाया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया because eyes are a little smoky and heavy so I did not want to overdo the face as well. So yeah, then to the highlighter I'm using this L'Oreal का highlighter and because I wanted a really glowy look and it looks very nice in the photos also. तो मैं अच्छे से इस highlighter को लगा रही हूँ in on my like all high points. So yeah, कोई भी highlighter आप ले सकते हो. It looks really good. And then to my lips I'm using this Nykaa का lip liner.
I don't remember the shade. I'll put it in the description box. But yeah, I lined my lips and then filled them in with the Nykaa All Matte lipstick. Now this was a little dark for my liking because eyes thode heavy the. I wanted a really nude lip, so I went in with this lipstick and then I applied the concealer on top of it and usko maine thoda blend kar diya, so it gave me the perfect nude pink lip that I wanted. So yeah, quick trick if you're looking for something and you don't have that lipstick, to create kar lo. And then I went in with my earrings, my outfit. I also added the highlight in my inner corners, by the way. It looks really good. And I also added a gloss on top because eyes hamari matte hai, so glossy lips look really good with that. And yeah, that completes this look. I really love it. I really love how it turned out. I hope you guys also enjoyed this. If you did, then please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Also, please do recreate this look and tag me. So yeah, I will see you guys in my next video. Bye.